Hmm, I think I am audible right now. Maybe I am audible right now. Um, am I am I audible? Um, am I audible? Am I still audible? Am I still audible? Yes. Okay. Okay. Yes. ओके सो आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर फॉर क्लास 11th जेई रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। स्पीड वही रहेगी जो कि एक पहली बार पढ़ने वाले बच्चे की तरह रहती है, क्योंकि मैं भी इस चैप्टर को पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग दिस further time. I hope you guys can see this. Thermodynamics and chemical equilibrium. Yes. Okay. So this is the chapter 8 of class 11th and नाम है इसका chemical equilibrium. We all know. uh, तो पढ़ते हैं chemical equilibrium क्या कैसा है। पहली बात तो इसकी अगर पीडीएफ शीट देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीडीएफ शीट में पूरा चैप्टर खत्म है। तो कुछ खास बड़ा चैप्टर नहीं है, देखते हैं आगे। सो वी हैव दिस चैप्टर chemical equilibrium एंड आगे अगर हम पढ़े इसका सॉरी so on carrying a chemical reaction in a closed vessel at a particular temperature, initially the reactant concentration keep on decreasing and the product concentration keep on increasing. After some time, a stage is reached at which there is no net reaction. This stage is called a state of equilibrium. So what is a state of equilibrium? एक बार और read करते हैं तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन को एक क्लोज्ड वेसल में करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्लोज्ड वेसल में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो इनिशियली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट डिक्रीज होगा और कुछ समय बाद एक स्टेज आ जाता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होती है, नो नेट रिएक्शन, ठीक है। इसी स्टेज को हम स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि अब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। सो यू नो मतलब समझ आ गया होगा आप सबको कि क्या होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब भी जो रिएक्शन है किसी भी क्लोज्ड वेसल में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, क्या किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन एक क्लोज्ड वेसल और पर्टिकुलर टेम्परेचर में अ, जब वो एक रीच कर लेता है एक ऐसा फेज जिसमें कोई भी रिएक्शन अब नहीं हो रही होती है, उसी को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो क्या होता है फिजिकल प्रोसेस? तो फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स such changes which only affect the physical properties. तो फिजिकल
प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंडरगोइंग चेंजेस, ठीक है। बट कोई भी इफेक्ट नहीं आता है केमिकल कंपोजिशन पे और उसके प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल रिएक्शन में प्रोसेस में किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट आता है, ना कि केमिकल कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज पे। वहीं केमिकल प्रोसेस में केमिकल कंपोजिशंस और प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जबकि केमिकल रिएक्शन हमसे और वही केमिकल चेंज जो ऑकर होता है, मतलब जो केमिकल चेंज हो रहा है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी चीज को बोलते हैं अच्छा ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल प्रोसेस का होना ही हम से बोलते हैं कि दिस केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। Now there are some types of chemical reactions. First type is decomposition reaction. So what is decomposition reaction? So in this kind of reaction, a compound decompose to produce two or more different substances. तो इसमें कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा, सिंगल कंपाउंड में कह रहा हूँ, एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कह सकते हैं कि या एलिमेंट भी बन सकता है या फिर कंपाउंड भी बन सकता है। तो ये जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक कंपाउंड है। यू शुड नोट दिस थिंग। ओके, देन वी हैव डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन इज ऑफ फूड इज ऑफ कोर्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्योंकि यार जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसमें आपका बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो होता है। तो ऑफ कोर्स डाइजेशन ऑफ फूड इज अ decomposition reaction. Maybe it can be asked in your class 11 board examination, so you should remember this thing. Okay, decomposition by heat is called thermal decomposition. तो अगर हम हीट यूज करें तो थर्मल, थर्मल ऑफ कोर्स थर्मल का मतलब ही हो गया हीट। और अगर डिकम्पोजिशन हम सनलाइट से यूज करते हैं तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऐसा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? दैट व्हाट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ये सब क्या होता है, ठीक है। मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन योर, ऑफ कोर्स यू शुड नो these things. Then you have learned about decomposition reaction, but it is a reaction in which a small compound, a single compound produces two or more different substance. For example, digestion, and we learned about two types of decomposition, thermal and photochemical. ऐसे तो और भी टाइप के होते हैं, but this is what the NCERT have given और इस बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। Now we have displacement, जेई मेंस और एडवांस में भी नहीं आएगा। एडवांस का नहीं कह सकते, एडवांस तो आउट ऑफ सिलेबस ही दे देता है, मेंस का कह सकते हैं। और एडवांस का भी 1% ही होता है वो, बाकी सब टेक लेवल होता है। बाकी अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब हमने क्लास 10th में कर रखा है, ये दिस इज जस्ट रिवीजन ऑफ दिस, तो बहुत ही ज्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एलिमेंट और ग्रुप by another is called displacement reaction. So what is displacement reaction? Displacement of one element or group. So displacement of any element, so or a displacement of a group by another is just nothing but displacement reaction. तो इनफैक्ट ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है काइंड ऑफ, क्योंकि आप देखो एक चीज यहाँ पे, एक सेकेंड, Zn ये जो Zn SO4 के साथ चला गया और H2 अकेला रह गया, सेम यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। बट एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हमें यहाँ दिख रहा है। क्यों हमें रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? क्योंकि आप देखो Zn में एक ऑक्सीजन और आ गया है, तो ऑक्सीडाइज हो गया है, और हाइड्रोजन यहाँ पे SO4 से चला गया है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। यू विल लर्न अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन फॉर। सो नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट। और अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट सबने पढ़ा है। दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल मत बोलना सर, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नाउ दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। इसको हम मिथेनेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या? मी था थे
मिथाथेसिस रिएक्शन। एक बार फिर से आप याद कर सकते हो, मेटा आपका जो इंस्टा फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, उसका नाम है मेटादासिस। मे बी यू कैन लर्न दिस लाइक फेसबुक्स फेसबुक कंपनीज सिस्टर मेटादासिस रिएक्शन। ओके, सो ये आपने नहीं पढ़ा था क्लास 10th में ऑफ कोर्स। In these reactions, two compounds react to form new compound. So इस तरह की रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट करती है कोई न्यू दो कंपाउंड ही बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजिलेशन स्टेट नहीं होता है, ठीक है, रिडक्शन नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In these reaction, two compounds react to form two new compounds and no change in oxidation state take place. Example, we have precipitation reaction. We all know about precipitation reaction and neutralization reaction. Neutralization reaction, of course, it happens in our stomach also, while HCl converts into a neutral solution. And precipitation reaction where a precipitate forms while the chemical reaction. Double displacement and metathesis reaction. Uh, in these kind of reaction, of course, two compounds react to form new compounds, and there is no change in oxidation states. Okay. Uh, are you supposed to remember these examples? You can, of course, you can remember these examples. Maybe it can be asked in subjective examination. इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक आसान हो सकता है H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करके H2+O2 बनाना, ये याद सबको रह सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम यही बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, आई लाइक दैट। रिमेंबर ZnSO4 is aqueous. Now double displacement reaction, metathesis reaction, these kind of reaction, this is okay, again this is a standard example of this. AgNO3 plus NaCl gives us AgCl plus NaNO3. Silver nitrate plus sodium chloride gives us Na AgCl plus NaNO3. Again, silver nitrate plus sodium chloride. I hope I am audible. Now we have reversible and irreversible reaction. So what is reversible and irreversible reaction? So a chemical reaction which always proceeds to completion in only forward direction is irreversible reaction, and reaction which do not proceed to a completion in forward direction and also proceed in the backward direction under suitable conditions. Example, this. Of course, so irreversible reactions only goes in the forward direction, but reversible reaction can of course go in the backward direction too. And yeah, this is the simple definition. You can write it also there. This is what the examination only wants to know, you to know. But forward direction and also proceed in the backward direction. You can just write that. This is good. You can. This word may be important. This word can be important maybe under suitable conditions. You should write this. Let's go. Re Irreversible reactions and reversible reactions refer to what? Nothing but chemical reactions, not physical reactions according to the book. Although it is not specified. So yeah, of course, you guys may have gotten that. These reactions never attain an equilibrium, and these reactions attain an equilibrium. Yes, of course, it is right. So, what
Equilibrium. Why this happened? Why they said that irreversible reaction never attain equilibrium? Why do you think? Why do you think it is? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे जब जाता है तो कम्प्लीटली तो कभी जाता ही नहीं है कि AgNO3 कम्प्लीटली यूज हो जाए या NaCl कम्प्लीटली यूज हो जाए, ये ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए शायद ये कह रहे हैं कि कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन करता नहीं है। ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन में वही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। Okay. Equilibrium can be established for both physical process and chemical process when there is no change in concentration of either of reactant or products take place. This stage of system is dynamic equilibrium. So what is dynamic equilibrium? You should, this is a important word. Let me highlight it more. Dynamic equilibrium. So what is dynamic equilibrium? So equilibrium which can be established in both physical, the word physical process and chemical reactions, जब कोई भी changes नहीं होते हैं in the concentrations or their reactants products, it is called dynamic. This stage, this system is called dynamic equilibrium. But there should be both physical process and chemical process. Equilibrium in both physical process and chemical process, and no change in the concentration either of the reactant or product. इरिवर्सिबल रिएक्शन में ना प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशंस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन चेंज हो ही रहा होता है, इसलिए ऐसा कुछ बोला गया। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम और भी तरह से क्लासिफाई हो सकता है। You have physical equilibrium and chemical equilibrium. So what is physical equilibrium? Equilibrium set up in physical process like evaporation of water, melting of solids, dissociation of solute is called physical equilibrium. But again, let me tell you, equilibrium set up in physical process. So evaporation of water, of course, after water evaporates, it may attain a equilibrium in physical conditions. Solids, melting of solid, of course, dissolution of solutes, of course. It is called physical equilibrium. Yes, yes, of course. I think you may have gotten this point. You can write this as an example. Ice goes into water, water goes into ice, of course. इक्विलिब्रियम क्या, क्योंकि आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर भी आइस में वापस से कन्वर्ट हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम उसी में आएगा जो कि रिवर्सिबल चेंजेस और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। At equilibrium, rate of melting point of ice is equal to rate of freezing point of ice. You guys must understand this. I don't know कितना समझ आया ये कि किसी भी आइस के मेल्ट होने का जो रेट होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम में, वही उसके आइस के फ्रीज होने का भी रेट होता है कि जितना जल्दी वो आइस मेल्ट हो रहा है उतना ही जल्दी वो आइस फ्रीज भी होगा। आइस सॉरी वाटर। Okay, what is chemical equilibrium? So if a reversible reaction is carried out in closed vessel, of course, क्या reversible reaction carried out in a closed vessel, a stage is attained. कौन सा? A stage is attained where the speed of the forward reaction is equal to the speed of backward reaction. It corresponds to chemical equilibrium at equilibrium. और जब केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम दोनों रीच हो जाता है तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस चीज के बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है। Okay, I can do this too.
ओके, अच्छे, हमने एक अच्छा मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया चैप्टर का। लेट्स गो फॉरवर्ड। So we have rate of forward reaction. Yeah, first you can write this as example. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ये इसका एक ग्राफ से समझाया गया है कि देख सकते हो, रेट कोऑर्डिनेट्स एंड रेट रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, उसी रेट से रेट ऑफ बैकवर्ड, ये बैकवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीज। एक ही टाइम पे दोनों साथ में जब आ जाते हैं, जब दोनों ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, 6 पॉइंट्स आर देयर, maybe you should learn about 5 points exactly, but 6 points should be good to just maybe as a backup. Equilibrium can be attained from either side. तो इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अटेन हो सकता है। ऑफ कोर्स सही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम जरूरी थोड़ी ना कि लेफ्ट से राइट जाते हुए ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते ही अटेन हो, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाते समय अटेन हो सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। यस, इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है। क्या मतलब डायनेमिक इन नेचर? मतलब कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी तरफ से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुके ही रुके। आगे, इक्विलिब्रियम पे देयर इज नो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। वी हैव लर्न इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन of both product and reactant doesn't change, no change in concentration. The equilibrium state remains unaffected. Yes, state remain unaffected by the presence of catalyst. So catalyst है मतलब कि रिएक्शन हो रहा है। yes, catalyst से तो रिएक्शन हो रहा है, पर इक्विलिब्रियम भी उस टाइम पे रहता है। catalyst help to attain the equilibrium rapidly, मतलब कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है, जल्दी अटेन करने में। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर ओनली। क्यों? क्योंकि यार बाहर के सर्कमस्टेंसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम को अटेन होने में प्रॉब्लम करेगा। द ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस बिकम constant. So the observable physical properties of the process become constant. The observable physical properties, ऑफ कोर्स यस, इक्विलिब्रियम आ गया है, कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, स्टेट चेंज हो नहीं रहा है, तो देखने में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट ही रहेंगे। यस, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो फिर से देखते हैं। कम ऑन वन मोर टाइम। वी हैव केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो जब भी हमें केमिकल, ओके, हमने इसके कितने पॉइंट्स, हमने इसके 3 पॉइंट्स याद कर रखे हैं क्या? कि क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होना चाहिए, और अ, एक स्टेज जबकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आए, उसे ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल केमिकल प्रोसेस?
फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओके 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 फिजिकल प्रोसेस क्या होता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस का केमिकल प्रोसेस क्या होता है केमिकल कंपोजिशन का प्रॉपर्टीज का चेंज होता है उसमें और केमिकल रिएक्शन इसी केमिकल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं ठीक है फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा स्मॉलर एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स में तो टूट जाता है सब्सटेंस में टूट जाता है इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं दो टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़े थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डाइजेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने ये भी पढ़ा है H2O को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2+O2 बनता है ये एक एग्जाम्पल है जो कि मुझे लगता है यही याद रखना चाहिए ना कि इस पीडीएफ का ओके फिर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इनफैक्ट अ रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है जिंक में जब हम H2SO4 डालते हैं तो ZnSO4 बन जाता है H2 निकल जाता है उसके बाद हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब दो सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर दो न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दो एलिमेंट होता है दो ग्रुप होता है ठीक है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है ऑक्सीडेशन स्टेट डोंट टेक प्लेस ठीक है इसका एक एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट्स AgNO3 प्लस क्या डालो यार AgNO3 में NaCl डाल दो तो NaC आप समझ गए NaNO3 प्लस AgCl बन जाएगा ओके फिर हमने पढ़ा इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है केमिकल रिएक्शन विच ऑलवेज प्रोसीड्स हाँ ठीक है हमें पता है ठीक है कि जो वो केमिकल रिएक्शन जो हमेशा एक फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में चलती है उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम अटेन कभी नहीं कर सकता और रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है पर करता है ठीक है इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है फिजिकल प्रोसेस से भी हो सकता है और केमिकल प्रोसेस से भी हो सकता है ठीक है और वो इक्विलिब्रियम जिसमें no change of concentrations of either of product or reactant take place. No change in the concentration of either of reactant or product take place. एक स्टेज आता है जिसका सिस्टम का जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम उसके बाद हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई भी फिजिकल प्रोसेस होता है और उसमें हम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं तो उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं ठीक है इसमें रेट ऑफ इसका एग्जांपल है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जो केमिकल रिएक्शंस में अटेन होता है जैसे अच्छा इसमें हमने तीन पॉइंट इसमें भी हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और स्पीड इसमें सेम हो जाती है ऑफ कोर्स ये सब पता होना चाहिए ओके ओके उसके बाद हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा ये थोड़ा सा हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा क्या क्या होते हैं 6 पहला कि इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अटेन हो सकता है ठीक है इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है कोई भी कंसंट्रेशंस में चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम के आने के बाद इक्विलिब्रियम और फास्ट हो जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में अनअफेक्टेड भी रहता है ये भी है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर ओनली एंड द ऑब्जर्वेबल पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ a process constant अगेन वन मोर टाइम इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ से हो सकता है आइदर द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम equilibrium is dynamic in nature equilibrium there is no change of concentration equilibrium remain unaffected by the presence of catalyst equilibrium
can be achieved in closed container only. Observable physical properties become constant. Again, one more time. Equilibrium is first of normally think about equilibrium. What we can see a reaction which is stopped. So you will see that observable physical properties are not changing. Yes, this is the first point. Okay, normally think it can goes from forward backward direction both. From the starting of the chapter we are seeing this equilibrium in a closed container. So of course equilibrium always sets in a closed container. You guys have heard about catalyst. So equilibrium don't affect by catalyst, and a catalyst helps to attain equilibrium faster. Yes. Then we have mm, yeah, equilibrium is dynamic in nature. So reactions equilibrium may be attained, but reactions may be taking places. Okay. And the last one is that uh, I think nothing is, yeah, equilibrium has no change of concentration. Okay, let's move further. So we are going with types of equilibrium. So what are the types of equilibrium? So we have first of all, okay, so what was that? These are also maybe types of equilibrium. This is physical and chemical, but these are some other types of equilibrium. Hmm. Homogeneous equilibrium. In homogeneous equilibrium, the reactants and product are present in the same phase or physical state. Okay. Again, let's see what it means. The reactants and products are present in same phase in homogeneous equilibrium. The product, reactant or product, same phase be present with the or physical state be present. Okay. Heterogeneous products are present. Okay. This can be understood by a good example. So homogeneous, first of all, homo means what? Everybody should know this. Homo means same, and hetero means different. Okay. So homo means same, hetero means different. So homogeneous equilibrium is when then the product and the reactant side has same kind of you know physical state. Okay. Physical state. That can be solid, gas, liquid, aqueous. Okay. Then we have heterogeneous equilibrium. So what is heterogeneous? It can be they can be present two or more kind of mm, different physical, what we call it, physical state, where like yeah, of course you must have understand this. We should not give too much time to this thing. Look at the example, you will understand. Here is gas, solid, solid, gas. Two or more kind of phases. There is gas, and of course the product side also has gas. So this is homo and this is hetero. Let's go further. We have law of mass reaction. So what is law of mass reaction? Uh, Even I don't know what is it. Even you don't know what is it. But if you still think about it, this is a law of something. Maybe they are calling mass reaction. Okay, let's go further. So this is stated by two guys, two buddies, two baddies. Whom Goldberg and Vogue. Again, again one more time. You may be Gult Goldberg and WAAGE Vogue. So they stated that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass. Again, come on, one more time. That the rate of chemical reaction
The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of the remaining substance for a general reaction. Let us, you, of course, I don't even understand what it means. So let's see an example. We have A plus B gives us backwards here. Okay. A is what? The balancing constant, what I don't know what you guys called it, but like 1, 2, 3, 4, it can be any natural number, which is the balancing constant. So, a rate of forward reaction is directly proportional to A to the power A into B. So, what does it mean by the bracket of A? So, the square bracket of A, I think it means the um, concentration of mass. I don't know what it means. Let us just study about. We guys need to study about it. But first of all, congrats you all that we had completed a hell good variety of the chapter right now, and we are only remaining with one, two, three, four pages. It doesn't have too much numericals as I can see that. Yeah, it doesn't have hell lot of reaction. Use of partial pressure. Yes. Okay. 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 I can see chapter ionic equilibrium. Wow. Wait. Um, ionic equilibrium भी है क्या इसमें? The solutions. I don't think so. ionic equilibrium भी साथ में पढ़ना क्या? नहीं नहीं तो आगे and wow. Rate of forward reaction is directly proportional to a to the power a b to the power b is equal to kf a to the power a b to the power b. Kf, kf and kb are rate constant. Okay. Okay. Rate of backward reaction is e to the power c d to the power d is equal to kb plus kc plus kc dd. Okay. Yeah. In heterogeneous equilibrium, the active mass of pure solid and liquid are taken as what? Come on, one more time. In heterogeneous equilibrium. So what is heterogeneous equilibrium? In heterogeneous there are two or more kind of phases, two or more kind of physical uh, prop stages. Okay. So the active mass of pure solid and liquid are taken as equilibrium. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So Kf, this is equal to this. So this by this is equal to Kc. Okay, so what is it? So rate of forward reaction divided by rate of backward reaction is nothing but Kc, which is nothing but the equilibrium constant. And Kc is equal to C to the power C, D to the power D upon A to the power A, B to the power B. Alright, I hope you have got it. Again, let me tell you this. They had mentioned that the square bracket C means that means the concentration of C. Okay, so you guys must know that. So we have learned about some formulas. What is it? First formula is that the rate of forward reaction is given by Kf, which is constant rate of forward direction, and then we have Kb. You guys may have understand that.
Then if we have to find equilibrium in heterogeneous equilibrium, that the mass of pure solids and liquids are taken as at equilibrium. The rate of forward direction is equal to the rate of backward direction. So yes, yeah, yep. Mm-hmm. Yeah, okay. So, case. Okay, so we this is an important thing. You should remember this, guys. As maybe as formula result, whatever. Kf by Kb is equal to equilibrium constant, and equilibrium constant is equal to uh, you know the rate of change of product and rate of change upon rate of change of reaction. Let's go further. Again, what is Kc? Remember the C thing, because you will find further you'll find a Kp thing. So Kc is equilibrium constant. Okay, so use a partial pressure instead of concentration. So at here we were using concentration, as I told you that square bracket means the concentration. But what if we are supposed to found the partial pressure? We are given a partial pressure. So how can we use that instant? Was I not audible very well, guys, to you? Maybe I'm more audible to you right now. Okay. So what is use of partial pressure instead of concentration? So if we have to use partial pressure instead of concentration for gaseous reaction, partial pressure are conveniently used since at any fixed temperature, partial pressure is directly proportional to concentration for a general gaseous reaction. Okay, so for a for gaseous reactions. Okay, so gaseous reactions mean of course all phases are in gas. Partial pressure are conveniently used because at any fixed temperature, partial pressure is directly proportional to the concentration. Yes. So for a general gaseous reaction, a to the power A plus B plus C is given that. Okay. So Kp is equal to Pc. So what? Partial pressure of C to the power C into partial pressure of T to the power D divided by partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B. Why we can take partial pressure instead of concentration? Because we know that at gaseous reaction partial pressure is of course directly proportional to the concentration. And what is the relation? Because Kp is somewhere directly proportional to Kc, that's why we are taking partial pressure and concentration. So this is the relation between partial pressure and Kp and Kc. Okay, what is Kp? uh, Kp is equilibrium constant. We have learned about that equilibrium constant. This is also equilibrium constant. Both are equilibrium constant, but this Kc is given by the concentration and Kp is equal to partial pressure. Okay, so Kp is equal to Kc into, again, what does the square bracket means? What do you think? I don't know. Um, RT change in Ng. Okay, RT. What is R? What is T? What is N? What is G? Uh, N and G is same thing. Okay, N of G. It means N of gas. R is what? R is, you guys all know, R is constant. T is the temperature in Kelvin, and delta N. Mm, delta N is number of moles of products minus moles of reactants of gases only. Okay, okay, highlight this point very well. This gas only. Okay, maybe sometimes people take solids as well. Okay, so relation between Kc and Kp for different types of reaction. When delta G is equal to 0,
Kp is equal to Kc. Of course, yeah. If the power is zero, it of means one. When delta G is positive, what do you think? What will happen? Delta G is positive. Okay, delta N G is positive means okay, delta N G is positive. It means Kc is gonna be bigger than Kp. What do you think? Just remember this, guys. I cannot just justify this. You guys can have a research why this happened, that Kp is greater than Kc if delta Ng is positive, and why Kp is greater than Kc. Kp is smaller than Kc if delta Ng is negative. Okay. Yes. Okay. Now unit of Kp. So Kp's unit is atm delta Ng and Kc units is mole per liter delta Ng. Again, one more time. Come on, one more time. Kp can be taken easily, of course. Kp is equal to Kc. Kc means atm cause it's pressure, partial pressure, and delta Ng. Wherever Kp is um, partial pressure mole per liter, mole per liter delta Ng and atm. Just remember these things. Important results, of course, these should be remembered. Kc is mole per liter delta Ng and Kp is atm delta Ng. SI unit, okay? Yes. Characteristics of equilibrium constant Kp or Kc. So it has definite value of every chemical reaction at a particular temperature. So Kp and Kc have different value for every chemical reaction at a particular temperature. So that's why we said that equilibrium should be in a constant temperature. So that we'll able to calculate that. But if the you change the temperature, Kp and Kc will also change. Okay. Yes, the more is the value of Kc or Kp, the more the exact completion of the reaction. That is, Kc is smaller than 1 indicates lesser concentration of products than reactants. What? Come on, one more time. अगर Kc ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा चांस है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा, और रिएक्शन कंप्लीट होने का ये मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट होने का ये मतलब है कि रिएक्टेंट कम हुआ होगा। तो अगर Kc 1 से कम है, 1 से कम है, तो इसका ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि Kc अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा रिएक्शन होगा, और ज्यादा रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। Kc अगर कम होगा तो कम रिएक्शन होगा, कम रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। नाउ K अगर 10 to the power, you should remember, अगर K -1 से कम ज्यादा होगा तो ये अलग चीज है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन Kp और Kc का कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से ही मतलब है, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए भी याद रखना है। अगर Kc 10 to the power 3 से बड़ा है तो मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। K का पावर अगर 10 to the power -3 से छोटा है या इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। K का पावर अगर 10 to the power 3 से -3, ओके, दिस अगेन यू शुड सी दिस। 10 to the power 3 से ज्यादा या 10 to the power 3 है तो रिएक्शन हो गया है। अगर 10 to the power -3 या फिर -3 से कम है तो
रिएक्शन प्रोसीड भी नहीं हुआ है. Again, we have achieved a big milestone, guys. We have completed 7/4 part of this chapter. Very very small chapter. Yes, of course. People are saying this is very small chapter. Of course, I agree with you guys that this is a pretty small chapter, and I think there is not too much to remember, isn't it or not? Maybe you need to remember these a bit. Maybe you need to remember these uh, statements. Of course, who knows what can be asked in your examination, school examination, of course. JEE only wants you to understand the concepts, which is sufficient for here. Not too much. You must have practiced your PYQs and your modules. If either PYQ or module depends. Okay, so uh, would you guys like to proceed further or want to take a break? Let's treat each other with a 10 minutes break. 10. Just just a second. So let's come after 10 minutes.
welcome back to this. Hmm. So let's proceed further. Okay, let's proceed further. When the reaction can be expressed as sum of two other reactions, the Kc of overall reaction is equal to the product of equilibrium constant of reverse reactions. What? Come on, one more time. Come on, one more time. The when the reaction can be expressed as sum of two other reactions, the Kc of overall reaction is equal to the product of equilibrium constant of equilibrium reaction in individual reaction. Let's try this again. When the reaction can be expressed in two other reactions, when the reaction can be expressed as two other reactions, the Kc of overall reaction is equal to the product of equilibrium constant of individual reactions. Okay. The equilibrium constant is independent of initial conditions of reaction. Okay. Equilibrium constant is independent of initial concentration of reaction. Equilibrium constant is independent of what? Presence of catalyst. Kc of for backward reaction is inverse. Okay. Kc for backward reaction is inverse and forward reaction. Okay. Okay. This is not, I think, property. This is very basic thing. We have been using this thing. Backward reaction is nothing but inverse of forward reaction of Kc. Yeah, this is, I don't know what is why is it written there. If an equilibrium is multiplied by n, okay, the k becomes k to the power n. Okay. And if it is divided by m, the k becomes k root k under root k m. Hmm, okay. Okay. So for example, if I okay, you guys may have understand it. If a simpler equation is multiplied by something constant value, the k becomes k to the power that constant value. And of course, if it is divided by what should do, but the inverse sign means the root of that. So you guys may have understand this. This is not a very big deal. Okay, again, you guys don't need to remember these as points. These can't be framed as questions. Okay. If an equation is multiplied by n, okay, the k becomes, okay, yes, we have understand that. In equilibrium, constant expression of activities are used in place of molar concentration. Okay, again, in equilibrium constant, okay, in an equilibrium constant, expression in equilibrium constant is if activities are used in place of molar concentration. If the activities are used in place of molar concentration, terms are used.
or only 2 pages are more remaining, so just wait a bit. If an equation is multiplied by n, the k becomes k to the power d. In equilibrium constant expression, if activities are used in place of molar concentration, k become dimensionless. Constant. An equilibrium constant. If activities are used in place, I don't even understand what is written. Let's try to go to the internet and search about this thing.
remember this, guys. In equilibrium constant expression, if activities are used in place of molar concentration, K become dimensionless. Okay, activities means nothing but things like gaseous. The reference pressure is usually 1 bar, 1 m. Okay, so it is 1. It means it is activities, and the K becomes dimensionless in that. Now we have reaction quotient. Now what is reaction quotient? So for any reversible reaction at any stage other than equilibrium, for any reversible reaction at any stage other than equilibrium, the ratio of molar concentration of the product to that of the reactants, where each concentration term is raised to the power equal to stoichiometric coefficient of the substance considered, is called the reaction quotient. Okay, so thank you guys for your time. I'll not be able to go further due to some pressure and tension. So thanks.